Good evening, everyone. Dear friends, let's continue the study of Spleen Meridian. I'm audible clearly. So, all the postgraduate diploma participants kindly keep seeing the Meridian video because every week we are posting new video. Otherwise, it will be great burden if you don't see them. So now we are continuing the discussion of the Spleen Meridian. Like few very important concept. हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण concepts है about the spleen. That I told you, the spleen governs the four limbs. स्प्लीन हमारे फोर लिम्स को गवर्न करती है. ओके. The point number 2, we have to understand spleen transport food chi as well as fluid upward. स्प्लीन फूड ची को तो ट्रांसपोर्ट करती है, और we can write in that way, spleen is converting both. One so we can understand in this way, spleen is doing transformation of grains what we are eating as well as fluid, like we are drinking juices, we are drinking soups, we are drinking many things. तो अभी हम ये इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. The point number 3 we will discuss, the spleen is the root of post heaven की. जन्म के बाद हमें जो ऊर्जा मिलती है वो हमें स्प्लीन के द्वारा मिलती है. And the fourth point we have to discuss, the spleen raising clear yang. These are the very important points which help to develop treatment protocols. जो हमारा treatment protocol बनाने में हमारी मदद करेंगे. Spleen raises the clear yang. So spleen raises the clear yang upward. Okay. Even few more points we will discuss, like spleen dislike dampness. स्प्लीन को डैम्पनेस पसंद नहीं है. ओके. एंड व्हाट आर द ड्रीम्स कनेक्टेड विद द स्प्लीन? ऐसे कौन से ड्रीम्स हैं जो स्प्लीन से कनेक्टेड हैं? एंड रिगार्डिंग द मेमोरी और थिंकिंग, sometimes we are seeing the spleen is connected with the memory and thinking, sometimes we are telling heart is connected, sometimes we are telling kidney is connected with the memory thinking.
So we will try to understand who is really connected with the memory. आखिरकार मेमोरी से किसका संबंध है? तो इतने पॉइंट हमें डिस्कस करना है, राइट, वन बाय वन. So we have to discuss these all points. Got it? So the first point is spleen governs four limbs. स्प्लीन का काम हमारी फोर लिम्स को गवर्न करना है. द पॉइंट नंबर वन. How the spleen is connected to the four limbs? So actually क्या स्प्लीन आर्म और लेग्स को कंट्रोल करती है पूरा? Spleen is not controlling arm and legs fully, but or we can tell spleen is not controlling arm and legs directly, but spleen is controlling arm and legs indirectly. What is the meaning of that? When spleen is healthy, it will supply good chi to the arm and legs. It will supply good blood to the arm and legs. It will supply good fluid to the arm and legs. And it will provide proper nutrition to the arm and legs. And we know, so when the spleen is supplying chi, blood, fluid, and nutrition to the arm and legs, if there is a continuous supply, because when we are eating the food chi is responsible for making this chi, the blood, the fluid, and nutrition. Okay. And muscles of the arm and leg are need this continuously. मसल हमारी जो आर्म और लेग्स की है ना, बराबर चाहिए, लगातार चाहिए. So that's why we can tell spleen governs our four limbs by supplying these all the nutrient, different type of the nutrient. If spleen is becoming weak, then there is no supply of the chi or the blood or the fluid or the nutrition. Then what will happen? क्या होगा? Person will tell you, I am feeling weakness in my arm or leg or both. I cannot climb stair. मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता. सीढ़ियां चढ़ना मेरे लिए संभव नहीं. Oh, I cannot lift my leg. I cannot lift my leg. My leg are so heavy. मेरे पैरों पैरों में जब एनर्जी नहीं होगी, ब्लड नहीं होगा, तो लिफ्ट नहीं करेगा. Don't have stamina. The person is not having stamina. Because but the meaning of stamina, you can run, you can work very nicely. Your muscle are tired, or there is a muscle atrophy. मसल थकी हुई है और मसल की एट्रोफी है. इवन देयर इज ट्रैम्बलिंग, यू आर डूइंग लिटिल वर्क, आपने जरा सा पानी का गिलास उठाया और आपके हाथ हिल रहे हैं, कांप रहे हैं. ट्रैम्बलिंग ऑफ द हैंड्स. जरा सा कुछ काम किया,
मसल को इतना इफोर्ट करना पड़ा. Your hand is normal, but as soon as you start doing some work, you start trembling. So little work also, little exertion, even after little exertion, there is a trembling in the hand. इस तरह से स्प्लीन कनेक्टेड है. यानी स्प्लीन हमारे मसल को एनर्जी देती है, फ्लूइड देती है, ब्लड देती है. और अगर स्प्लीन कमजोर हो गई तो इनसफिशिएंट फूड ची पहुंचेगी. और पेशेंट विल टेल यू, डॉक्टर आई स्लीप फॉर 8 hours बट स्टिल आई एम बेकिंग टायर्ड. मैं 8 घंटे सोता हूं और सुबह जब उठता हूं तो थका हुआ. इसका मतलब स्प्लीन इज वीक. So this is the classical example of the spleen chi deficiency. Even after sleeping for enough time, a person getting up in the tired condition. Because sleep is the process who repair the body. Okay. But spleen is weak, then there is no proper nourishment and the person remain tired all the time. So person is having fatigue, weakness of the muscles. Okay. Weakness. Weakness is a very prominent sign. So this is the point number 1. The point number 2 is spleen. हमारा point number दूसरा था. Spleen transport food chi as well as fluid. The point number 2. Spleen transport food chi as well as fluid upward. Very important point. Spleen transform, then transport food as well as fluid. So what is happening? Stomach is receiving the food. Stomach is receiving the grains, getting converted in the food chi by spleen. जो भी हम ग्रेन्स खाते हैं स्प्लीन की मदद से फूड ची बन जाता है. But we are drinking lots of water, like we are drinking water, we are taking tea, we are taking soup, we are taking milk, we are taking different type of the juices and all. Okay, we are taking glucose water. So stomach is storing, just storing. Stomach is storing, and what do? Spleen again take this fluid. Spleen take this fluid, then separate pure from impure and send the pure fluid upward. स्प्लीन का एक ही काम है कि हमने जो भी पानी पिया, हमने जो जूस पिए, हमने जो दूध पिया, चाय पी, स्प्लीन उसमें से उसको बस एक बार छान देती है. प्योर कम, इम्प्योर गो. So spleen is taking this clear fluid and moving it upward. Okay. And impure fluid moving downward. तो क्लियर फ्लूइड ऊपर चला गया, लंग्स के पास गया और फ्लूइड जाके लंग्स के पास जमा हो गया. द क्लियर फ्लूइड
So clear fluid and impure fluid. मानो कि आपने एक मौसमी का जूस पिया, okay, or you have taken orange juice, pomegranate juice. Let's take the example orange juice. Or you have taken water. Spleen will divide in pure, clear, and impure. The clear fluid will go to lungs. Then lung will distribute it. Lung इसे distribute कर देगा. Lung is sending below the skin. Lung is sending this fluid to the muscles. Lung is sending this fluid to the sweat gland. And lung is keeping this fluid in the upper body. लंग इस फ्लूइड को भेज देगा. जब लंग ना भेज पाए तो स्किन ड्राई हो जाएगी. स्किन को पानी नहीं मिल रहा है. कौन नहीं भेज रहा है? लंग नहीं भेज रहा है. तो स्किन का नरिशमेंट, लुब्रिकेशन, स्किन का जो पानी कौन बना के रखता है? लंग से आने वाला फ्लूइड. So we are drinking lots of different type of the water, or we are taking water in any form, like we are eating watermelon. In the watermelon, we are having more than 70 to 80% water. So spleen take the pure fluids, then it is coming to the lung, then lung sending to skin. Our skin is hydrated and lubricated. So that's why we are telling keep hydrated. अपने को hydrated रखो. Otherwise आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, मसल ड्राई हो जाएंगी. मसल ऑल्सो नीड वाटर. मसल को भी पानी की जरूरत पड़ती है ना. एंड स्वेट ग्लैंड ऑल्सो नीड वाटर. स्वेट ग्लैंड एंड अपर बॉडी नीड वाटर. What happened with the impure fluid? Impure fluid क्या होगा? Impure of that अब नीचे जाएगा. So impure fluid where will go? So we know this is the stomach. Then we have small intestine. Then we have large intestine. So the impure fluid from stomach to go to the small intestine. Then it will go to the large intestine. Then from the large intestine के पास एक क्षमता होती है. हमारा जो भी खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे महत्वपूर्ण काम है वो पानी को एब्जॉर्ब करना. द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन absorbing the water. If the large intestine is not absorbing the water, then we suffer with the dehydration. क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? हमारे शरीर के बहुत सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है. Major absorption of the water happening in the large intestine. Otherwise, we will get dehydration. So impure fluid stomach से, from the stomach it is going to the small intestine, then it is going to the large intestine, then from the large intestine it will be absorbed and going to the urinary bladder, then it becomes urine. So impure fluid going to the stomach, then to the small intestine, then to the large intestine, then to the urinary bladder, then it is becoming urine and going out in the form of urination. अब आप एक बात समझिए, ये सारी मेहनत, ये सारा काम स्प्लीन के कारण हुआ. स्प्लीन एब्जॉर्ब प्योर फ्लूइड. अब मानो स्प्लीन ने वीक हो गई. Spleen is not absorbing pure fluid because spleen is weak.
क्या होगा? Then fluid, this is called the disturbance of the fluid metabolism. कि पहले पानी आया, पानी के दो भाग हो गए, एक प्योर भाग ऊपर चला गया, इम्प्योर भाग नीचे चला के बाद में यूरिन बन गया. Now this process is not happening. Spleen is not separating the pure from impure because spleen is weak, spleen chi deficiency is there. Then it will not go upward to the lungs. If it is not reaching to the lungs, then it will not reach to the skin. Skin will be dry, muscle get affected, upper body will be not having enough fluid. पानी ऊपर नहीं गया तो कहाँ जाएगा? कहीं तो जाएगा, कहीं तो जाएगा ना. पानी तो है, पानी तो पी रहे हो आप, जूसेस तो पी रहे हो, खाना तो खा रहे हो. Even you are eating the fruits. In the fruit we are having 70% plus water. If spleen is not absorbing this water, then where will go? It will become flame or dampness. It will become edema, swelling, puffiness, water retention, heavy body, like we see in many thyroid patient. थायराइड पेशेंट में क्या देखते हो आप? स्प्लीन कमजोर हो गई. In the thyroid patient, spleen is weak, then not absorbing pure fluid, then they are getting water retention, bloating in the body, bloated stomach. So if spleen is weak, what will happen? There is a disturbance of fluid metabolism. हमारा fluid metabolism disturb हो जाएगा. Then lots of fluid will become the formation of flame. Flame का निर्माण होगा. Formation of dampness. There is now swelling or edema or water retention or puffy eyes. Puffiness will be there. I am not directly telling eye, puffiness will be there somewhere. The heaviness in the body. And if you see the tongue will be very sticky. तो जब भी हम कभी भी किसी पेशेंट को देखते हैं, अगर उसे सूजन है, स्वेलिंग है, डैम्पनेस है, हैवीनेस है, वाटर रिटेंशन है, whatever you tell it, hormone imbalance or the thyroid problem or whatever you tell it, but ultimately this is connected to the spleen deficiency. If your spleen is strong, you eat the food, it will convert in the chi. There is no unwanted flame dampness. There is no unwanted water retention, swelling, edema. So this was the second function, but we discussed spleen is not only transporting grains or the food chi, but spleen also transform and transport fluid. Clear? Fluid. Now point number 3. The point number 3 was spleen is a root of post heaven key. Okay. So we know we are discussing pre-heaven key and post-heaven key.
So point number 3, spleen is root of post-heaven key. The pre-heaven key is stored in kidney. We are bringing it from parents, we are bringing it from childhood, and it cannot be replaced easily. It is the pre-heaven essence stored in the kidney. लेकिन एक होती है पोस्ट हेवन की, that is we are getting from the food, we are getting from the air. So food is having connection with the spleen and the air is having connection with the lung. So after the birth, we are getting the energy from the food, from the water, and from the air. Got it? So spleen is very, very important. If we are taking proper diet, we can strengthen the spleen. If we improve our lifestyle, we can strengthen the spleen. If we do acupuncture, we can strengthen the spleen. We can take some Ayurveda medicines, we can take some naturopathy treatment. We can consider in that way कि किडनी एनर्जी ऐसी है जैसे हमने अपने पूर्वजों से कोई संपत्ति प्राप्त की है. We are getting inheritance property. What we are getting from our parents, that inheritance property is the prenatal chi. And spleen is like a daily income. You are earning daily, that is the spleen. So after the birth, spleen play a very, very important role for energy, for health. तो जब भी स्प्लीन कमजोर होती है, the very, very important sign, if spleen is weak, the very prominent important sign, blood deficiency. Means your post-heaven key is not good. You are not eating right food. Your lifestyle is not good. Or the chi deficiency. Some person is complaining that I feel lots of weakness. That is the problem with the post-heaven key. Or person is suffering with the malnutrition, not eating good food. Only eating the food which is looking tasty but not good for body. If the spleen is weak, person is tired and fatigued. एकदम से थका हुआ रहता है. Got it? If the spleen is weak, person will having slow recovery from illness. So whenever anyone is complaining about the weakness, about the low hemoglobin, about the chi deficiency, always think for spleen. Spleen के बारे में हमेशा सोचिए. Got it? So now we are moving to the point number 4. Spleen raising clear yang upward. Very, very important point. Spleen raising clear yang upward. This is the point number 4. Very, very important thing. Spleen is not only digesting the food, but it is sending the essence upward. So this upward movement is called
raising the clear yang. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समुद्र को देखें, समुद्र की लहरें चलती रहती हैं और उसकी भाप बनती रहती है और भाप ऊपर उड़ के बादलों का निर्माण करती है. Like if you see the ocean, lots of waves are there and continuously there is formation of the like clouds. There is a continuously some mist is going upward forming the clouds. So spleen is like that when something is going upward. The clear yang is going upward. Spleen is that. कि ऊपर की ओर ले जाने वाला फंक्शन वो स्प्लीन का है. Then this clear essence reaching to the lung, even the heart. Okay. And remaining turbid things, best material is sent downward by the stomach. So spleen and stomach working with the coordination. So the meaning of this clear yang is clear yang का मतलब है. So clear yang means the highly refined, nutrient or very pure food chi, or the very refined and pure fluid. This is going upward. This is the meaning of clear yang. If the spleen is good, if the spleen is healthy, then this will happen. Then your lung will be happy, your heart will be happy, your skin muscles, upper body will be happy. Every part of the upper body getting good nourishment and the good energy. Got it? And remaining best material is moving downward. जो भी गंदी चीजें, गंदगी है वो नीचे की ओर जाती है. So this action is done by the coordination with the spleen and stomach. Like spleen is lifting the pure energy up and stomach is sending impure energy down. दोनों मिलके काम कर रहे हैं. If any one disturbed, then both will get disturbed. Either the spleen will get disturbed or the stomach will get disturbed. It will create problem with both. Spleen should send the chi up. Stomach should send the things chi down. Then it is called a very perfect digestion. Now, what will happen if this is not happening properly? अब क्या होगा? Suppose if this not happened properly, whatever we are eating the food, maybe spleen is weak. So not sending very refined, pure chi or fluid upward. स्प्लीन कमजोर है तो नहीं भेज रही है ऊपर, और sending some impure fluid upward. Some turbid fluid upward. Then what will happen? Now it will create heaviness in a head region, brain fog,
आपका ब्रेन फॉगी हो जाएगा, पुअर कंसंट्रेशन, इवन blurred thinking, you will not able to think properly. दिमाग में सही एनर्जी नहीं पहुंच रही है, दिमाग ठीक से चलेगा नहीं, कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगा, सिर भारी रहेगा, और ब्रेन में ऐसा लगेगा जैसे क्लाउड्स आ गए हैं, ब्रेन फॉग हो जाएगा. गॉट इट? बिकॉज proper nourishment is not going to the head region. Even my person might suffer with the dizziness, fatigue. तो स्प्लीन का काम है ऊर्जा को ऊपर की ओर लिफ्ट करना. स्प्लीन इज रेजिंग द क्लियर यांग अपवर्ड. Now spleen is not raising the clear yang, तो क्या होगा? वही क्लाउडी वाला, वो टर्बिड, गंदा वाला एनर्जी जब ऊपर आएगा तो सब फॉगी फॉगी हो जाएगा. That's why the person suffering with the spleen deficiency, they are having poor concentration, poor memory. They are not able to memorize something very fast. Okay. That's why person is studying too much, like 10 hours, 12 hours, and they are not doing any physical activity. They are not doing strengthening the spleen. So till they are having good spleen, there is no issue. Because once the spleen is going in the disharmony, then they will not able to memorize the thing in right time, in less time. They need more time. So in this way, spleen is raising the yang upward. Spleen is raising upward. So even it is keeping all the organs upright. अगर spleen और sink हो गई, if spleen is not raising, clear yang upward, and if spleen getting too weak, or we are telling spleen chi sinking, then what will happen? The prolapse of uterus, prolapse of rectum, uterus बाहर निकलेगा, rectum बाहर निकलेगा. So what we have to do? We have to strengthen the spleen. Prolapse of urinary bladder, even hemorrhoid, hernia, everything is moving from place, varicose veins, ये सब होगा. So these all things will happen if spleen is becoming too weak and not able to raise the clear yang upward. Got it? इन सब में क्या ट्रीटमेंट करना है? The treatment of all the thing is strengthen the spleen. So this was our point. Spleen raises the clear yang. Now the next point, spleen dislike dampness. स्प्लीन को डैम्पनेस पसंद नहीं है. पॉइंट नंबर 5. इसका मतलब ये नहीं कि स्प्लीन को पानी पसंद नहीं है. पानी अलग होता है, डैम्पनेस अलग होता है. एंड स्प्लीन इज नॉट कनेक्टेड विद द सुसाइडल टेंडेंसी.
Spleen is not connected with suicidal tendency. Okay. Spleen will make brain foggy. Brain foggy means poor memory, poor concentration. You're not able to. ब्रेन फॉगी का मतलब क्या होता है कि आपकी आंखों पर हरा चश्मा लगा दिया तो सब चीज हरी हरी दिख रही है, काला लगा दिया तो काली काली दिख रही है. Your brain become, you are not able to see. If the clouds are there, you cannot see the sky. If fog is there, you can't see the clear picture. And the person will become too much doubtful for everything. Because he is having, okay, something wrong here, something wrong there, something wrong there. Suddenly, person becomes too much doubtful. Spleen will make brain foggy. Okay. So the next point is spleen dislike dampness. ये बात सही. जैसे कई बार आपने देखा होगा कि सामने चीज चल रही है पर समझ में नहीं आ रही है. ऐसा होता है ना कई बार. कहते माइंड और गई है. लाइक क्लास चल रही है, कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोला क्या बोला. हाउ फाइब्रोमाइल्जिया. फाइब्रोमाइल्जिया हाउ. सिजोफ्रेनिया. अभी रुक जाओ भैया, बड़ी बड़ी बीमारियां अभी आ गई. बड़ी बड़ी बीमारी अभी रुक जाइए. पहले फटीग, टायर्डनेस बीमारी है. वेरिकोज वेन, हेमरॉइड, प्रोलैप्स, weakness of the muscles, weakness of the arm, weakness of the leg, not able to walk on the legs, leg become too heavy. शरीर ऐसे लग रहा है कि कुछ लटका लटका है, पेट नीचे लटका लटका लग रहा है, ब्रेस्ट भारी लग रहे हैं. So now this was the point number 5. Point number 5 is spleen dislike dampness. स्प्लीन को डैम्पनेस पसंद नहीं है. इसका मतलब क्या है? एक उदाहरण से समझ सकते हैं. लाइक स्प्लीन वांट टू डाइजेस्ट द फूड एंड वांट टू मेक द फूड ची. स्प्लीन को खाने को पचाना है और ऊर्जा का निर्माण करना है. एक कल्पना करिए, लेट्स इमेजिन एक गीली लकड़ी को आप जला रहे हो. यू आर ट्राइंग टू बर्न वेट वुड और द वाटर डिप्ड वुड. So now it will take too much time. The fire will become sluggish. In the same way, when the dampness is there in the body, the function of spleen becoming sluggish. कि जैसे गीली लकड़ी को जलाने में ज्यादा समय लगता है, ऐसे ही हमारे शरीर में जब डैम्पनेस बढ़ जाती है तो हमारी जो फायर है ना, वो खाने को ठीक से पचा नहीं पाती. डाइजेस्टिव फायर becoming sluggish if the dampness is there. So we are not able to transform the fluid, we are not able to transform the food very efficiently. जैसे कि डैम्पनेस का मतलब क्या है? स्प्लीन डिसलाइक डैम्पनेस. स्प्लीन को डैम्पनेस पसंद नहीं है. तो क्या पसंद नहीं है स्प्लीन को? रेन पसंद नहीं है स्प्लीन को. रेन आप में से कईयों को पसंद होगी. स्प्लीन डजंट लाइक रेन. स्प्लीन डजंट लाइक क्लाउडी वेदर, ह्यूमिड वेदर. स्प्लीन को पसंद नहीं है क्लाउड्स, बरसात. आपने कहा चलो कहीं चलते हैं नदी किनारे, और नदी किनारे गए, बैठ गए,
ठंडे ठंडे पत्थरों पे बैठ गए, लेट गए। स्प्लीन डजंट लाइक दिस। स्प्लीन डजंट लाइक रेन, रेनी वाटर, क्लाउडी वेदर, or you are sitting on the cold stone near the river. Spleen doesn't like it. You are wearing the wet clothes, गीले गीले कपड़े पहने हो, बारिश में भीग गए, एक ने एक आपके फ्रेंड ने कपड़े चेंज कर लिए, आपने चेंज नहीं किए। आई एम फीलिंग कूल, आई एम फीलिंग गुड। स्प्लीन डजंट लाइक इट। स्प्लीन को पसंद नहीं है गीले कपड़े पहनना। स्प्लीन डजंट लाइक यू आर स्टैंडिंग इन द वाटर। स्प्लीन डजंट लाइक यू टेक द बाथ फ्रॉम कोल्ड वाटर। स्प्लीन को पसंद नहीं है कि आप झरने के नीचे ठंडे पानी से नहाओ। स्प्लीन को ये सब नापसंद है। स्प्लीन डजंट लाइक दैट यू लिव इन द डैम्प हाउस। ऐसे घर में जहां पर वो घर में लगी रहती है ना, नमी होती है, स्प्लीन को पसंद नहीं है। द पर्सन हैविंग स्प्लीन डेफिशिएंसी, दे विल सफर। टिल you don't have spleen deficiency, you can enjoy, you can enjoy rain, you can enjoy riverside, you can enjoy spring bath। जब तक आपकी स्प्लीन अच्छी है तब तक आप एंजॉय कर सकते हो। आपकी जिस दिन स्प्लीन कमजोर हुई, बरसात में नहाओगे बुखार आ जाएगा, पानी में खड़े रहोगे तबीयत बिगड़ जाएगी, धरती पे सो जाओगे ठंडी ठंडी पीठ से अंदर घुस जाएगी ह्यूमिडिटी। स्प्लीन doesn't like these dampness, these are called external dampness। तो एक्सटर्नल डैम्पनेस क्या होता है? स्प्लीन डिसलाइक डैम्पनेस। स्प्लीन को बिल्कुल पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं? ये देखो स्प्लीन का, आई डोंट लाइक क्लाउडी वेदर, रेन, रेनिंग वाटर, कोल्ड स्टोन, सिटिंग, स्टैंडिंग इन वाटर, डैम्पनेस इन होम। स्प्लीन को पसंद नहीं है। और वेट क्लॉथ्स, गीले कपड़े, ये सारे हैं एक्सटर्नल डैम्पनेस। ना इंटरनल डैम्पनेस। स्प्लीन डजंट लाइक आइसक्रीम्स। स्प्लीन डजंट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड वाटर, रॉ सैलेड। स्प्लीन को ये सब पसंद नहीं है। टू मच स्वीट, एक्सेसिव स्वीट, और टू मच ग्रीसी फूड। आपने कहा दबा के खाते हैं भैया क्या? ग्रीसी फूड, घी, कि डाल दो 3 चम्मच घी भर के। स्प्लीन को पसंद नहीं है भाई। इफ योर स्प्लीन इज हेल्दी, यू कैन एंजॉय एवरीथिंग। आप में से किसी की भी हेल्दी नहीं होगी, कम से कम 90% लोगों की हेल्दी नहीं होगी। वाई? बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट पीपल। The intellectual person having weaker spleen, few are exception. If some of you are going for gym every day or doing good workout every day and not working too much,
mental work, then might be having good spleen. बट मुझे ऐसा लगता नहीं है। आप लोग मेंटल वर्क तो खतरनाक करते ही होगे सबके सब। करते हो ना मेंटल वर्क, एवरीवन इज डूइंग मेंटल वर्क, नहीं ना? सो मोस्ट ऑफ द पर्सन हैविंग वीकर स्प्लीन। और डॉक्टर की स्प्लीन बचाना बहुत कठिन है। डॉक्टर की, एक्यूपंक्चरिस्ट की स्प्लीन को बचाना, मतलब अगर डॉक्टर ने, एक्यूपंक्चरिस्ट इज एबल टू मेक द स्प्लीन इन गुड कंडीशन, आपके पास खजाना है भाई। So what will happen if there too much dampness? No, no. You're eating too much sweet, it means it's not the weak spleen. I'm telling, spleen dislikes sweet. What is the meaning of that? If the person eating too much sweet, it might weaken the spleen. Craving of sweet is a different thing. Craving might be happen because of the psychological craving, stress craving. We are having low blood pressure or low sugar craving. Craving might be because of many things. But regarding the sweet also, if you are taking the sweet, sugar, chocolates, they are having more. The eating the sweet after the meal is not the Indian culture. In the Indian culture, we start the food with the sweet. आखिरी में छाछ पी जाती है, आखिरी में स्वीट लेना इंडियन कल्चर नहीं है ना? आप खुद सोचो, खाना खाया और लास्ट में आइसक्रीम खाई, वेदर इज इट गुड फॉर डाइजेशन? लेकिन यही तो ट्रेंड है ना? इज इट ट्रेंड? यू ईट द फूड, इन द लास्ट यू ईट द आइसक्रीम। Whether you're eating the food, then after that you are putting the cold ice cream so that your digestive fire collapsing down. So as per the Ayurveda, we should take sweet. Okay. Then there is a different sequence. Okay. लास्ट में क्या लेते हैं? छाछ, वाटर मिल्क, so that we can digest the food, है ना? If the spleen is weak and the person is taking these things like going in the cloudy weather, going in the raining water, or eating the ice cream, cold drink, or eating too much sweet after the meal, if your spleen is healthy, whatever you eat, there is no any problem. But if your spleen is weak, then these things will create after the meal. Oh, I'm feeling too heavy in my body. I want to sleep for some time. Oh, I'm feeling too much heaviness in my head. Oh, my brain is not working. Why I have kept the class after the food? My brain is not working. Heavy body, heavy heads, brain fog. These all things are the clinical signs when your spleen is weak. Okay. छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चों को खाना खिलाओ तो बोलता है कि अब मुझे सुला दो, थोड़ा सा आलस लग रहा है, बोलता है क्या? कभी नहीं बोलता। वो खाना खाने के पहले भी वैसे कूदता है, खाने के बाद भी वैसे कूदता है, क्योंकि स्प्लीन हेल्दी है अभी।
when we become adult, after the meal, oh, where is bed, let's go for योग निद्रा, है ना? थोड़ा सा आंखें बंद करके. But definitely, as for the adult, it's a required nowadays, because working immediately after the meal is very bad for spleen. खाना खाया और खाना खाने के बाद आप तुरंत काम में लग गए, ये तो स्प्लीन के लिए बहुत खराब है. So after the meal, it's a very good to have the brain relaxation. You can listen some music. You can do some yoga nidra. You can relax. Don't do any intellectual work immediately after the meal. So what is the clinical sign? Heavy body if spleen is weak. Heavy head. Foggy brain. Okay. और brain fog. ये सब होगा. And वो हम बात कर ही चुके हैं, like edema, even the white discharge in the female. It means there's too much dampness. So this was about the spleen dislike dampness. Spleen को dampness पसंद नहीं, तो क्या करना चाहिए? खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना चाहिए, मतलब few sips of hot water. If your spleen is already weak, then you should take some hot herbal tea. Okay. So this was our point. Spleen dislike dampness. Now let's move to the point number next. Dreams of spleen. Dream of spleen. जब स्प्लीन कमजोर होती है, ड्रीम ऑफ स्प्लीन. एक फनी सीन हुआ आज ही. एक पेशेंट को मैं ट्रीटमेंट दे रहा था और ट्रीटमेंट के समय उसने मुंह खोल लिया था. क्या हुआ? ओ, मैंने सोचा कोई मुझे कुछ खिला रहा है. कोई लड्डू खिला रहा है. मैंने कहा लड्डू. So during the treatment, he opened the mouth and telling someone, I thought someone is giving me laddu. That is a sign of weak spleen. Because ये ड्रीम है ना, कोई लड्डू थोड़ी है, सपना है. So patient is dreaming of hunger. Hunger. And that is a sign of spleen. And patient is, ऐसा कहते हैं भाई कि अगली चीज का तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग देखिएगा. पोस्ट अच्छा अच्छा, ओके. पोस्ट ऑपरेटिव अगर स्प्लीन एक्सेस होती है ना, तो व्यक्ति गाना गाने के सपने देखता है. ही इज सिंगिंग. आई डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट. जस्ट आई एम टेलिंग यू एज पर TCM. If the person is having weaker, if person is having weaker spleen, he is seeing the dream of like hunger. And if the person is having excessive spleen, he is dreaming of singing. वो सिंगिंग का ड्रीम क्यों आता है वो मुझे नहीं पता भाई. आप लोग जरा, आप में से ऐसा कोई किसने सपना देखा हो सिंगिंग का, तो मुझे बता देना उसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी. हाँ, लेकिन लड्डू वाला तो मैंने पेशेंट आज ही देख लिया. He was having severe weakness of the spleen. So the dream, even there are lots of different dream also coming, but let's skip that part. Let's move to this point number 7. Memory, very important thing.
memory. Memory or thinking, whether having connection with spleen, heart or kidney. मेमोरी का संबंध किससे है? Point number 7. Memory is having connection with spleen or heart or kidney. Okay. We know heart is the place of Shen. Heart is the place of Shen. Okay, that we know. Let's first talk about the spleen. Spleen is very helpful for concentration. If you want to study, you want to learn something, you want to focus, you want to memorize something, spleen is required. Spleen health is required. Like you want to prepare for examination. आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, एग्जाम के लिए स्प्लीन की जरूरत है. ओके, गॉट इट. Because for the exam, you need concentration, you need study, you need learning, you need mental focus, you need to memorize something. And what is the heart? Heart is having connection with the long-term memory from childhood till now. Long-term memory. Heart we can't tell just for learning or for passing the exam or for focusing or memorizing something. Heart is having connection with wisdom, with mental clarity. हार्ट का संबंध हमारी विजडम से, मेंटल क्लैरिटी से है. हार्ट इज हैविंग कनेक्शन विद द इमोशनल प्रोसेसिंग. तो हार्ट का संबंध एक अलग है. हार्ट की जो होती है ना चीज, since the childhood till now, we have some events in the life, some emotional events, even some traumatic events, some right judgment of the life, some wrong judgment of the life. So heart is keeping that out, all memories from the childhood. Heart is having connection with the long-term memory. Got it? Remembering important events even from the childhood, even now also. तो हार्ट की मेमोरी वाली नहीं है पढ़ने वाली. हार्ट की मेमोरी वो क्लैरिटी वाली है, एक क्लैरिटी, एक विजडम है, विजडम. गॉट इट? इफ यू वांट टू पास द एग्जाम, स्प्लीन शुड बी गुड. और जो लाइफ के एग्जाम्स होते हैं ना, जिसमें कभी कभी इमोशनल्स ब्रेकडाउन होते हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देयर इन द लाइफ, that all memories having connection with the heart. Now third is kidney. Kidney is having connection with a short term memory. Kidney is connected with short term memory. Kidney nourish our brain.
So kidney is having connection with the brain nourishment. और mental vitality. जैसे उदाहरण के लिए till morning we met with someone, but evening we forgot. That is called short-term memory. Short-term memory, what happened yesterday, I forgot. What happened 15 days back, I forgot. But I remembering what happened in childhood. I remember what happened in my young stage when I was a student, I was studying in the college. I remember all that. But short-term memory is not there. Because बुढ़ापा आता है तो किडनी कमजोर हो जाती है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कमजोर हो जाती है. With the old age, we see short-term memory problem is there because kidney is having connection with the short-term memory. Got it? So if you want to if you want to pass the examination, health of spleen, kidney, heart, which required? अगर आपको एग्जाम पास करना है, किसकी हेल्थ जरूरी है? स्प्लीन की. अगर आपको जीवन का एग्जाम पास करना है, किसकी हेल्प जरूरी है? इमोशनल अप्स एंड डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेकअप्स, लव, मेमोरी ऑफ लव और विजडम, राइट जजमेंट, रॉन्ग जजमेंट, दैट इज ऑल आवर हार्ट. और शॉर्ट टर्म मेमोरी, इफ योर शॉर्ट टर्म मेमोरी इज गुड, इट मीन्स योर किडनी इज गुड. यार लगता है चलो तीनों ही वीक हो गए हैं. तीनों ही खत्म हो चुके हैं लगता है. ना तो सुबह का याद रहता, ना पढ़ा हुआ याद रहता, और चाइल्डहुड का तो पूछो ही मत. साफ है. कुछ बचे ही नहीं. है ना? ऐसा भी लग रहा होगा ना किसी किसी को. लग रहा है किसी को सब साफ है. ऐसे ही होता है. एक्चुअली इट हैपन व्हेन योर माइंड इज इन टू हॉच पॉच, देन यू फील लाइक दैट. जब हमारा माइंड बहुत सारे टास्क हम ले लेते हैं ना, ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को एग्जाम पास कराना है, खुद क्लिनिक चलाना है, हस्बैंड की भी देखभाल करनी है और वाइफ की भी करनी है, और ये वो पेशेंट की भी ऊपर से एक्सपेक्टेशंस, फिर फाइनेंशियल किराया देना है, ये करना है, वो करना है, लोन रिपेमेंट, लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द माइंड. वी थिंक वी लॉस्ट अवर ऑल टाइप ऑफ मेमोरीज. But that is not really. These are because of chaos in the mind, right? तो तीन प्रकार की मेमोरी होती है. हमने मेमोरी को भी समझ लिया. सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड फ्यू पॉइंट्स. तो जब आपको अभी पढ़ाया और कल तक भूल जाओ तो किडनी को ठीक कर लेना, हार्ट को ठीक करोगे तो बचपन से लेके अभी तक का सब याद आ जाएगा, और स्प्लीन को ठीक करोगे तो पीजी डिप्लोमा के एग्जाम में पास हो जाओगे. एग्जाम अगस्त या सितंबर में करवाएंगे, ठीक है? अगस्त या सितंबर में करवाएंगे. तो जो लोगों का स्प्लीन अच्छा होगा वो लोग पास हो जाएंगे, जिनका स्प्लीन कमजोर होगा वो लोग फेल हो जाएंगे. और जो फेल हो जाएंगे उनको देखेंगे क्या करना है. डोंट वरी, फेल कोई नहीं होगा, ये तो मजाक की बात है. ओके. हाँ, डन. तो ये हमारा था स्प्लीन का चैप्टर नंबर. वी हैव कंप्लीटेड 3 chapters till now of the spleen. 3 or 4 chapters. So now we will continue the session in the next class. Yes, please. नेहा जी, सर आशा जी. हाँ, बोलिए. नमस्ते सर. नाइस नमस्ते. क्लास. अभी आपने बोला किडनी और हार्ट और स्प्लीन का मेमोरी के बारे में. वो गॉल ब्लैडर भी बोलता है ना सर, थोड़ा कनेक्टेड है गॉल ब्लैडर को भी.
Gallbladder is having connection with what? Memory? No. No? Okay. Okay. And what about the lungs when it is becoming sadness, grief? उसको That is भी different connection है emotions. क्या? See, Emotions. yeah, so whenever like lung is having connection with the emotion, kidney and every different organ is having connection with the emotions, liver is having connection with the emotion. All the emotion finally affect your heart. Hmm. Okay. सारे इमोशन हमारे हार्ट को, जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति फियर में है, लेकिन Hmm. नेक्स्ट टारगेट इज हार्ट. फर्स्ट किडनी Okay. देन द हार्ट. Someone is having lots of worry, first spleen then the heart. Heart is the final target. Okay. Oh, gallbladder is connected for the decision maker. Yes, the decision making is a different condition. देखो decision making के लिए मेमोरी अच्छी मेमो होनी जरूरी नहीं है. नहीं है. ओके. डिसीजन मेक करने के लिए मेमोरी की क्या जरूरत है? भूल गया तो Memory? डिसीजन No, का. no, no. Decision making is a different thing. I can ask my friends whether I should invest in this stock or not. My friends tell, oh, this is good stock. Okay, invest. The decision. ओके. मैंने अपना कोई मेमोरी यूज नहीं किया, मैंने अपने फ्रेंड को पूछा बस. वो ओके. मुझे फ्लैट खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए. मेरे फ्रेंड ने बोला बहुत मस्त है, खरीद लो. खरीद लिया. हाँ. तो मैंने मेमोरी ओके. क्या यूज की? नहीं किया. ठीक है. और और जो लंग सोचेगा खरीदूं, नहीं खरीदूं, खरीदूं, नहीं खरीदूं, उसका गॉल ब्लैडर वीक है. वीक है. या ओके. तो नहीं खरीदना, हटो, बात खत्म, नहीं खरीदना, या खरीदना वो स्ट्रांग है. तो स्ट्रॉन्ग. ठीक है. और लंग्स और मेमोरी कभी इतना. देखो क्या होगा, कोई भी इमोशन जो होता है ना, सपोज हम्म. समवन इज हैविंग लॉट्स ऑफ सैडनेस, डिप्रेशन, हम्म. then it will affect your lungs, then the heart, then it will हम्म. affect your memory. But it हम्म. will affect the memory. Why? Because of the lung is affecting your heart. The heart is having connection with the memory. ओके. Yeah. ओके सर. थैंक यू. Heart is having connection with the consciousness. Heart is हम्म. having connection with the mental clarity. हम्म. Any emotion, you always think heart. ओके सर. Okay. Okay. If for the exams and all, for children's and all, we can use this spleen points Yeah. to remember in the exams. Some people they Yes. will Yes. forget. Yeah. Spleen. Okay. So Okay. acupuncture is very much helpful for the patient suffering with any type of the problem, and definitely if we change the lifestyle and we do the acupuncture, we can 100% help the Give person. them. And regarding the prenatal chi also we can improve, but Hmm. not fully. Okay, prenatal chi, Tripti Sehgal ji, your questions. Sir, Can lifestyle changes? Yeah, definitely we can improve the prenatal chi, but not 100%. Like suppose for example कि कोई, हम अपने माता पिता से अपनी जो प्रीनेटल ची लेके आते हैं, तो समझो कि हम बहुत सारा खजाना, हमारे बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारे पेरेंट ने हमें दे दी. Hmm. थोड़ी बहुत हम चेंज कर सकते हैं, बट नॉट फुल. ओके, लिटिल वुड बी कैन डू चेंज. सो प्रीनेटल ची क्या होता है? बी ब्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स प्रीनेटल ची. और हम क्या करते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें प्रॉपर्टी दी, हमारे माता पिता ने हमने एक गाय दे दी, हमको एक गाय दी, है ना. लेकिन उस गाय को चारा खिलाना पड़ता है बाद में. आप सोचो माता पिता ने गाय दे दी, तब इसको ना तो चारा खिलाएंगे ना तो पानी पिलाएंगे, और ये जिंदगी भर दूध देती रहेगी, ऐसा नहीं होगा. सो वी आर गेटिंग द प्री नेटल ची फ्रॉम द पेरेंट्स लाइक ए काउ, बट वी हैव टू फीड इट. सो वी हैव टू फीड अवर प्री नेटल ची. वी हैव टू प्रिजर्व अवर kidney essence. Okay, if we best our kidney essence too much, then with the acupuncture point we can again improve it. Prenatal chi also we can improve it. Okay. Yeah. sir,
कई बार देखा गया है, मेरे को 3-4 पेशेंट्स ऐसे मिले हैं जो बोलते हैं कि हमारी पूरी पूरी मेमोरी गायब है। मतलब याद ही नहीं है, ऐसा भी हुआ है हमारे साथ। हम इस बंदे से मिले हैं या हम यहाँ गए हैं, याद ही नहीं है। वो किस तो लिए होता है हार्ट, सर? any like maybe any emotion has affected the heart. ओके। Because see, any emotion is affecting the heart. Heart is having connection with the long-term memory and the mental clarity, consciousness, and the emotional processing. इन सबका संबंध हार्ट से है। तो हो सकता है कभी कुछ ऐसा हुआ हो लाइफ में, इमोशनल बहुत ज्यादा ओवरबर्डनिंग हुई हो, तो व्यक्ति फिर वो कोलैप्स कर जाता है, उसका मेमोरी सिस्टम कोलैप्स कर जाता है उसका। सर पॉइंट्स। पॉइंट अभी ऐसे थोड़ी बताते पॉइंट, अभी पैटर्न मतलब स्प्लिन वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप ना। पॉइंट बता दूंगा तो स्प्लिन खत्म कर दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा अगला स्टेप में। पॉइंट इज द लास्ट। पॉइंट बताए, फुल स्टॉप। पॉइंट तो आएंगे हम। ओके, ठीक है। डॉक्टर ज्योतिका जी, संतोष जी। सर सर स्पीच का स्प्लीन से कनेक्शन, मतलब जैसे हार्ट से बोलते हैं, फिर लंग्स को पावर देता है स्पीच को, और सिंगिंग के लिए स्प्लीन स्प्लीन है, और पेक्टोरल नहीं, की भी। सपने, अच्छा सिंगिंग का सपना देखना, सिंगिंग करना नहीं। मैं सपना देख ठीक रहा है। हूँ कि मैं गाना गा रहा हूँ। सर आपने डॉक्टर हॉल की क्लास में भी शायद कुछ ऐसा बताया था, अगर मुझे सही याद हो तो, कि स्प्लीन, अच्छा वो लैरेंजियल टॉन्सिल की So you're हेल्प asking like as per the TCM connection of that speech एंड स्प्लीन with the से क्या heart or the कनेक्शन? spleen or with the kidney or what, right? स्प्लीन का क्या रोल है स्पीच में? देखो क्या होता है कि हमारी जो आवाज होती है ना, लाइक अगर हम बात करें, हार्ट इज गिविंग पावर टू योर टंग। हार्ट हमारी जीभ को ताकत देता है ना। तो स्पीच इज हैविंग कनेक्शन विद द हार्ट। ओके, सो स्पीच इज, बट स्प्लीन, we have already discussed spleen making food chi, lung making air chi, both together become gathering chi which reside in the chest, and that is the power of voice। वॉइस की एक पावर होती है, देखो, कि आवाज में एक दम होती है ना। जीभ तो चल रही है, जीभ को तो हाथ चला रहा है। बोल रहे हैं आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, ज्योतिका जी क्या मेरी बात सुन रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज पतली हो गई, वीक हो गई, कमजोर हो गई? ये So the low ताकत दी। volume speech और द बिग वॉल्यूम स्पीच। क्या आप मेरी बात सुन रही हैं ज्योतिका जी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है ज्योतिका जी? तो ये वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है ना। हार्ट तो मेरा बढ़िया है, मस्त है। हम्म। So that speech is also having, sometime we are speaking, if our jhong chi is good, even the 500 people can listen. But if my lung weak, my spleen is weak, my jhong chi is weak, then I'm feeling weak, my voice will be weak, tired, and the low volume speech। तो वो लो वॉल्यूम स्पीच हो जाएगी इसमें। तो इसी स्पीच का संबंध हमारे, हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम स्प्लीन की बात करें, स्प्लीन बताता है कि आवाज में कितनी ताकत है, और सर जी, हार्ट आपको बुलवा। सर जो एक अंदर अंदर बात चलती है, जैसे कोई मंत्र बोल रहे हैं या हम कुछ अपने अंदर बोलते तो हमें सुनाई देता है, वो हाँ, किस चीज से होता है? अपने आप होता है कि आप करते हो। देखो, हम्म। दो तरह की बातें हैं। हम इस कुछ बोल रहे हैं, वी आर डूइंग दैट थिंग, राइट? We are doing purposefully because we want to meditate, we want to do mantra chanting, we are doing that. That is good, or maybe good, but if it is happening without your permission ओसीडी and पेशेंट्स में it भी is तो होता making you tired, है। if it is making you tired, then it is weakness of spleen। अच्छा अगर ये आपको, जैसे मंत्र चैंटिंग चल रहा है, मंत्र सुन के तो लगता है समथिंग पॉजिटिव, पर मान लो मंत्र चैंटिंग नहीं चल रहा है,
आप कोई मूवी देख के सोए हो, मूवी उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, या कुछ आपने देख लिया था इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट वीडियो, उसकी प्रोसेसिंग चल रही है और चल ही रही है, आपके कंट्रोल में नहीं है। सो व्हेन स्प्लीन इज वीक, टू मच ओवर थिंकिंग इन द माइंड, टू मच ओवर थिंकिंग, माइंड विल वो नॉट जो स्टॉप। सुनाई देता है सर, जैसे अपन, मैं बोल रही हूँ अगर ज्योतिका इज अ गुड गर्ल, मैंने अपने अंदर से बोला तो मुझे सुनाई दिया हाँ ना, मतलब वो एक्चुअली जैसे कोई गाना प्ले करने लगता है अपने अंदर दिमाग हाँ। में कई बारी। तो तो ये ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है और ये स्प्लीन से होता है? मतलब एक्यूप्रेशर से देखे तो स्प्लीन, बट ये कोई ब्रेन का भी कोई पार्ट होता है जो ये करवाता है? नहीं, स्प्लीन कैसे मतलब कैसे स्प्लीन? नहीं, अभी आपने बोला ना ओवर थिंक, वो जो थॉट्स चलते हैं जो सुनाई देते नहीं, हैं। चलना, वो ओवर हम्म। चलना, मैं कह रहा हूँ कि अगर स्प्लीन कमजोर होगी तो हम्म। ओवर थिंकिंग होगी। कंट्रोल भी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पर्पजफुली मंत्रा चैंटिंग कर रहा है और उसको सुन रहा है, हो सकता है उसको इससे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही हो, हम्म। तो फिर वो वीकनेस ऑफ स्प्लीन थोड़ी हुआ, वो तो हम्म। फिर कनेक्शन का हार्ट हो गया ना उसका। देखो मैं आपको बताऊं, हम्म। दिमाग में जो थॉट अपने आप चलते हैं बिना हमारी परमिशन के चलते हैं, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, अनवांटेड थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स कहते हैं, वो स्प्लीन की कमजोरी से आते हैं। बिना हमारी परमिशन के आते हैं, वो स्प्लीन की कमजोरी से आते हैं। लेकिन कभी हम लाते हैं, हम कुछ बोलते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, वो एक अलग चीज है, वो दैट इज नॉट स्प्लीन। मतलब आप जैसे चैंटिंग दो की बात जगह करो से तो आप आई कर रहे थिंक हो से ना। ऑब्सेसिव थॉट्स चलते हैं ना, ओसीडी पेशेंट्स में, उनको कंट्रोल नहीं रहता, कुछ भी आ रहा है उनके अंदर, थॉट मार दो, उठ के जाओ, कूद जाओ, कुछ भी आ रहा है दिमाग में, तो वो स्प्लीन को हमें देखना चाहिए तो उनमें। उसमें क्या है ना कि वो उस तरह के जो थॉट्स आते हैं उसमें स्प्लीन इज इन्वॉल्व डेफिनेटली, बट हार्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व बिकॉज इमोशन द पर्सन इज हैविंग involvement of the heart. Heart is also having connection with the mental clarity. Heart is also having connection to consciousness. उसका consciousness बिगड़ा हुआ है। ये महा ये मतलब जो सीजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं, जो जो भी इस तरह के पेशेंट होते हैं, दे आर हैविंग दीज पैटर्न्स कमिंग इन द हार्ट, क्योंकि हार्ट थोड़ा उनका हार्ट फॉगी हो गया अच्छा। है ना, हम्म। हार्ट के ओके। ऊपर जी एक मिस्ट जमा हो गया है। वैसे जी काफी नमस्ते समय सर। तक जैसे ना सुबह उठते हैं तो कोई गाना बज रहा होता था मेरे दिमाग में, तो मैंने कहा कौन हाँ, बजा रहा है, मैं तो ऐसे गाने सुनती भी नहीं हूँ। तो तब मेरे को लगता था ये मेरे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो ये गाना चला रहा है और मुझे सुनाई दे रहा है। ऐसा कई बार होता है कि रात को हम जिस चीज को सुनते हुए सोते हैं ना, कई बार वो सुबह उठते हैं तो वही चीज चल रही होती है सर ना। बिल्कुल बेकार गाने, जो कि मैं तो उस तरह के गाने भी नहीं सुनती, तो दैट्स द टाइम क्वेश्चन आया, मैंने बहुत लोगों से पूछा, कोई कोई जवाब नहीं देता कि अपने आप ही कैसे चल रहा है गाना अंदर। ऐसा तो नॉर्मल होता है कि हमने कभी कोई गाना देखा, सुना, वो हमारे अंदर स्टोर रहता है, वो कभी भी चल पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं कभी है। भी ऑन हो जाता चल जाता है, ऐसा तो हमारे सबके साथ है। होता है। रोज सुबह उठ के एक फ्रेश गाना, और वो भी बेकार सा, या कोई बिल्कुल ही ढूंढना हो पड़ेगा सकता है कौन सा कभी आप गाना। सो रहे थे, कहीं कोई गाना बज रहा था और आपके ब्रेन ने कैच कर लिया। हम्म। अब जैसे गणपति के समय, मेरे दिमाग में गणपति का गाना बार बार आ रहा था, फिर मैं जाके वॉक करने गया तो देखा कि दूर वो गाना बज रहा था। तो कहीं ना अच्छा। कहीं से उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रिक्वेंसी आती है ना, तो वी हाँ। गो इन दैट वे, राइट, हम उस वे में चले। जी सर, थैंक यू सर। ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो। अब बंद हो गया फिर, वो है काफी ना। हीलिंग करी, बंद हो गया अब तो। लेकिन सवाल रह गया था कि ये कैसे हो रहा है। ओके जी सर, थैंक नमस्ते यू। सर। संतोष जी, यस प्लीज, या जी सर, आज जैसे ये एक पैटर्न है स्प्लीन का, इसी पैटर्न की एक पेशेंट आई थी आज। मतलब मोटा मोटी यही पैटर्न है, थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन सर उनको अस्थमा की प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या इसके कारण अस्थमा ये लंग्स पर भी इफेक्ट आते हैं? वो कॉम्बिनेशन विद लंग पैटर्न हो जाएगा वो। क्योंकि अच्छा अस्थमा मीन्स अस्थमा माइट बी हैविंग कनेक्शन विद द लंग और किडनी आल्सो, है ना, क्योंकि लंग से कनेक्शन हो सकता है, किडनी से कनेक्शन हो सकता है। वैसे तो अस्थमा कई प्रकार का होता है, जी। लेकिन हम्म, या तो ज्यादातर जो अस्थमा होते हैं वो लंग या किडनी से कनेक्टेड हो सकते हैं। स्प्लीन का तो एक ही काम है, फ्लेम का निर्माण करना। अस्थमा के साथ जो कफ का निर्माण हो रहा है वो स्प्लीन कराती है, लेकिन इसके साथ लंग और किडनी की डिसहार्मनी जी। है वो, तो उसमें लंग और किडनी पैटर्न में जाना पड़ेगा, है ना। अच्छा। और सर एक और एक ट्रिगर कार्डियक फिंगर अस्थमा का होता है, मैंने एक कार्डियक पेशेंट अस्थमा में को क्या होता है, ट्रीटमेंट। एक मिनट, कार्डियक अस्थमा में क्या होता है,
कि वो अलग होता है, दैट इज हैविंग कनेक्शन विद द हार्ट. Person is walking from one room to another सर room. उनको Person is walking little, doing little exertion and getting breathlessness. That is called, so that might be in the cardiac asthma. हार्ट से कनेक्टेड अस्थमा होता है. फिर किडनी अस्थमा होता है ना, किडनी से कनेक्टेड अस्थमा होता है. वो सर डिफरेंट उनको एलर्जी हॉस्पिटल. टाइप का है ऐसे, हाँ, एलर्जी टाइप का है और बहुत सारा पैटर्न स्प्लीन से मिलता जुलता लग रहा था, इसलिए मैंने पूछा कि क्या इसका कनेक्शन हो सकता है. और कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, क्योंकि स्प्लीन तो जी, जिम्मेदार है. स्प्लीन तो, हाँ जी, यस, स्प्लीन इज हैविंग कनेक्शन विद मल्टीपल. स्प्लीन का संबंध तो मल्टीपल ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशंस में है, लंग के साथ है स्प्लीन का पैटर्न. आज जी आज तो एक बार ट्रीटमेंट मैंने उनको फोरगेट वगैरह दिया, अब देखते हैं कल का क्या होता है. और सर थोड़ा एक वेट ट्रिगर करिए फिंगर सर. का मैंने ट्रीटमेंट दिया था, हम्म. ट्रिगर फिंगर का ट्रीटमेंट दिया था, लेकिन सर इसमें उन्हें कोई रिलीफ तो नहीं आया कल. कौन सा ट्रीटमेंट दिया था ट्रिगर फिंगर का? पहले पहले ट्रिगर फिंगर का आपका जो वीडियो में दिया हुआ था ना, वो वाला ट्रीटमेंट DU20 दिया था. गॉलब्लैडर 34. LU10, हाँ हाँ हाँ, वही तो वाला फिर और कुछ डायग्नोसिस LU10. होती है, क्योंकि इसी प्रोटोकॉल से हमने कई लोगों को ठीक किया है, तो फिर उसकी थोड़ा डायग्नोसिस चेंज हो सकती है. अच्छा, क्योंकि कोई भी डिसीज होती है ना, उसके और भी कारण हो सकते हैं. द सेम प्रोटोकॉल we have और applied कैसे for many. सोचूं सर. So we'll think in a different. भी अभी नहीं समझ सकते. ट्रिगर फिंगर इज नॉट हैविंग जी, कनेक्शन विद द स्प्लीन पैटर्न, सो वी कांट डिस्कस राइट नाउ. ठीक है, क्योंकि ओके यही तो सर. प्रॉब्लम आ रही थी पहले, हम जो समझ हम डिस्कस कर रहे थे ना कल तक, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी दैट वी आर नॉट हम्म, गोइंग स्टेप बाय स्टेप, वी आर जंपिंग हियर एंड देयर. उसमें सबको समझ में नहीं आता. ठीक है सर. आप नोट कर लो क्वेश्चंस, जी और वी विल गो विद द जी, सेम फ्लो व्हाट वी आर डिस्कसिंग करेंगे. ओके. ओके. यस. ओके, ठीक है सर, थैंक यू. अरुण जी, सदाब जी, मोहम्मद जी. सर यस सर जी, सर, यस सर. हाँ. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ, ये फियरफुल ड्रीम क्यों आते हैं? क्या? फियरफुल, डरावने सपने. डरावने सपने? डरावने सपने आते हैं गॉलब्लैडर की कम डिसहार्मनी से. इफ द गॉलब्लैडर तो इज इनका कुछ वीक, और गॉलब्लैडर की जो डिसहार्मनी होती है, तो डरावने सपने आते हैं, है ना. गॉलब्लैडर व्यक्ति को कायर बना देता है, कॉवर्ड. गॉलब्लैडर इज स्ट्रॉन्ग, देन पर्सन विल बिकम वेरी ब्रेव, वेरी डेयरिंग पर्सनैलिटी. बट द गॉलब्लैडर इज वीक, पर्सन विल बिकम कॉवर्ड. उससे फिर डरावने सपने आते हैं उसको. तो इसके लिए हमें गॉलब्लैडर को मजबूत करना चाहिए, है ना. जैसे गॉलब्लैडर 40 इज द सिंगल पॉइंट जिसके माध्यम से हम इस पर वर्क कर सकते हैं. सेकंड, हार्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व. गॉलब्लैडर और हार्ट का टाइम वैसे भी एज पर द ऑर्गन क्लॉक साइकिल, बोथ आर अपोजिट ऑर्गन. तो गॉलब्लैडर के साथ साथ थोड़ा सा हार्ट का इन्वॉल्वमेंट रहता है उसमें. ठीक है. गॉलब्लैडर और हार्ट मिलके, तो हार्ट को भी थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना चाहिए. मेन कल्प्रिट इज गॉलब्लैडर. थैंक यू. सर नमस्ते सर. नमस्ते जी. सर मेरा टोटल नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन हुआ सर, 40 अच्छा डेज बोलो. हुआ सर. हाँ और हाँ. जब से भूख नहीं लग रही सर. तो कुछ और आपको एक मेडिसिन मेडिसिन दी गई होंगी इसलिए. हाँ सर, और एक ये जो मेरे मजल्स में फड़कन आ रहा है सर, किसमें फड़कन आ उछल रहा रहे है? मजल्स, हैंड मजल्स, हैंड हाथ में? के. हाँ, हैंड में नहीं, आर्म. आर्म में फड़कन आ रही है, ट्रेमलिंग? हाँ हाँ, ट्रेमलिंग. तो आपको स्प्लीन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. वही क्योंकि सब आज पूछने ही के हमने लिए बताया किया. ना कि अगर स्प्लीन स्प्लीन जब कमजोर होता है, हम्म, आप थोड़ा सा भी एग्जर्शन करोगे, हाथ से कुछ उठाओगे, तो हाथ में ट्रेमलिंग चालू हो जाएगी. और दूसरा, भूख नहीं लग रही है, नो एपेटाइट. नो एपेटाइट इज ऑल्सो द साइन ऑफ और स्प्लीन. सर, जी हाँ. तो स्प्लीन का भी तो सिंपल प्रोटोकॉल, स्प्लीन 3, 6, यस सर. है ना. हम्म. CV12, स्क्रीन स्टोन 3 36, ST36. आप पता है वो लगा लेना. ओके सर, ओके, थैंक यू सर. ये सदाब जी. सर एक पेशेंट है और उनकी आवाज़ बिल्कुल ठीक थी पहले,
और अब कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उनकी आवाज जो है ना कम हो गई। अब वो जब बात करते हैं तो वो बहुत जोर लगाए करते हैं, मतलब बहुत पावर देना वीक पड़ती है। तो वॉइस सर इज क्या ये बिकॉज ऑफ द वीक झोंकी। अगर इस, आवाज नहीं निकल रही है तो लंग स्प्लीन को स्ट्रेंथन करिए, अच्छा क्योंकि आवाज निकलती है छाती में से। तो जी, सबसे मेन तो लंग है, नो डाउट, बट द ओके झोंक सर। ची इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लंग एंड द स्प्लीन। तो कल अगर जो आपने बताया आपका था कहना है कि आवाज वीक है, कमजोर है ना, है ना, सर, कमजोर यस सर, तो जी, आपको लंग और स्प्लीन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अच्छा सर। उसका कुछ अच्छा ना, सर या इस, हो सकता है आप चेक करना, हो सकता है एक कमजोर हो गया हो, एनी वन, ओके सर, तो उसको स्ट्रेंथन कर दो। अगर आपको लगता है कि दोनों हैं तो दोनों को स्ट्रेंथन कर दो। ओके सर। सर क्या स्टार मैग्नेट 15 से 20 घंटे लगा सकते हैं पेशेंट के? हाँ, अगर क्रॉनिक उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एक्यूट है और पर्सन अगर बहुत वीक और टायर्ड नहीं है, तो तो सर, आप मैग्नेट्स का समय और लंबा कर सकते हैं आप। और सर ड्यूअल मैग्नेट का? एक्सेसिव ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन से कई लोगों को फटीग हो जाता है। अच्छा, तो आप देखो फटीग नहीं है तो लगा सकते हो और सर ड्यूअल मैग्नेट? एनी मैग्नेट, वेदर द ड्यूल मैग्नेट द स्टार मैग्नेट, एनी मैग्नेट। इवन इतने मेथड तो लंबे सर समय उससे क्यों करेंगे लगाना ना? चाहते हो? नहीं वो लगा सकते हो, पर कोई कारण? सर इसलिए लगाना चाहते हैं कि आपने एक बार बताया था कि एक अपंचर्स कोई साइंटिस्ट थे, तो जिन जो 24 घंटे निडल लगाते हैं हाँ, डॉक्टर अपने जू। पास। डॉक्टर डॉक्टर जू जी, और डॉक्टर जू तो निडल सर लगा हम, के रखते हैं 24 घंटे के, 48 से 48 घंटे निडल लगा के रखता है patient। हाँ, तो सर हम भी लेकिन वो लगा क्या सकते करता हैं है सर कि ये? उनका जो डॉक्टर्स होते हैं ना, हर घंटे 2 घंटे में वो निडल को मैनिपुलेट करके जाते हैं, फिर हम मैनिपुलेट करते मैनिपुलेट करके जाते हैं, है ना। हैं, यस बॉडी, सर, नहीं तो बॉडी यूज टू हो जाती है, फिर बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। मैनिपुलेट करना निडल को जरूरी अपना मान लेती है, वो अपने बॉडी का है। पार्ट मान लेती है। मैग्नेट जी, में भी ऐसे होता है, अगर मैग्नेट बहुत लंबे समय तक लगा दिया जाए, निकाल के लगा दो वापस, यस सर। तो बॉडी को क्या लगेगा, हाँ कुछ चेंज हो, नहीं तो बॉडी क्या यूज टू हो जाती है, फिर रिस्पॉन्ड नहीं करती। ऐसा रहता है। वैसे सर अमूमन तौर पे 6 से 8 घंटे तो लगा सकते हैं। हाँ, लोग लंबा भी लगाती हैं, नो डाउट। ऐसा कुछ देखो नुकसान क्या होगा, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। अगर आपको ज्यादा रिस्पॉन्स चाहिए तो निकाल के वापस लगा दो। लेकिन पेशेंट दूर रहता है, वो खुद तो कर नहीं सकता, ठीक है, थोड़ा लंबा समय लग रहने दो, चलता है। लेकिन ओके अगर पेशेंट को कमजोरी लग रही है तो हटा दो। सर, एक क्वेश्चन और था सर। सर DU 24 में सर जब निडल हम लगाते हैं सीडेट करने के लिए, हम्म तो यहाँ लगती है, तो सर उसको उसका जो मेथड होगा लगाने का ऐसी होगा ऊपर को, जैसे DU 20 पे लगाते हैं सीडेट? डायरेक्शन ऑफ निडल। यस सर, सीडेट हाँ, करना है अगर तो सर? तो ऐसे लगा दोगे, यस, क्योंकि यस सर, मेरिडियन ऐसे ही आ रहा है ना, ऐसे लगा यस, दोगे। हाँ। ऐसे लगा। हम्म ओके ओके सर, थैंक यू ओके। वेरी मच। यस कल्पना जी। सर, ऐसा हो सकता है कि किसी की बॉडी में स्प्लीन एक्सेसिव हो जाए, कभी हो सकता है ऐसा? होता है ना, ओके। स्प्लीन एक्सेसिव भी होती है। ओके, मतलब जनरली कमी होती है पर कभी कभी हो सकती है ना? अभी हमने इसीलिए तो आपको बताया था कि अब स्प्लीन एक्सेसिव है तो क्या लक्षण होंगे। स्प्लीन हीट बढ़ जाती है कई बार। ओके। एक चीज बताऊं, वैसे अगर आपने बोला स्प्लीन एक्सेसिव होती है कि नहीं होती है ना, ये पूछ रहे हो ना। हाँ हाँ, माय माय डाउट इज देयर कि कैन इट बी एक्सेसिव, एक्सेसिव हो सकती है क्या? जैसे हम स्प्लीन के जो एक्सेसिव वाले पैटर्न पढ़ते हैं ना, एक तो देखो है स्प्लीन डेफिशिएंसी, इज वेरी कॉमन। स्प्लीन डेफिशिएंसी तो हाँ बहुत कॉमन है ना, नो हाँ, लाइक डाउट। सबका वीक है। लेकिन जब मान लो किसी के अंदर डैम्प हीट हो गई, डैम्प हीट इन द स्प्लीन हो गई, डैम्प कोल्ड हो गया, वो सब एक्सेसिव पैटर्न में आता है स्प्लीन। ओके, हो सकता है, मिस चांस है। हाँ।
ओके तो एंड हमें सर थैंक यू। स्क्रीन की गर्मी को हमें क्लियर करना पड़ता है पूरा। ओके एंड सर थैंक यू, आपके वीडियोस देख के मैंने कैंप किए थे 2-3 मास्टर टूंग के पॉइंट्स का, तो लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट लगा एंड वेरी गुड। गुड कहाँ रिस्पॉन्स पर रहा। किया था? मुंबई? सर अहमदाबाद में। ओके, अहमदाबाद। वेरी नाइस, वंडरफुल। थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स क्लोज द सेशन नाउ, सी इन द नेक्स्ट क्लास। कल हमारी क्लास होगी मेरिडियन के ऊपर। तो मैं ग्रुप में पूछूंगा कि कितने लोगों ने मेरिडियन के वीडियो देख लिए। अगर 15-20 लोगों ने मेरिडियन के वीडियो देखे होंगे तो क्लास होगी, नहीं तो मेरी भी छुट्टी, आपकी भी छुट्टी। और वैसे भी वीडियो आप देख सकते हो, वीडियो अगर आप देख सकते हो तो क्लास की कोई जरूरत ही नहीं है। खुद ही मैं आपको वीडियो डालता जाऊंगा मेरिडियन के, आप देखते जाओ, है ना। वो भी एक अच्छा प्रोसेस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वीडियो बहुत सिंपल भाषा में समझाए गए हैं, तो मेरे ख्याल से उसके रिवीजन की जरूरत है क्या? नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं है। जो मेरिडियन की वीडियो डाल रहा हूँ ना, ऐसे ही चल रहे थे डायरेक्ट। चल, फिर अगली क्लास मंडे को होगी। फिर भी अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है, पहले आप वो वीडियो देखिए। हालांकि वीडियो में हमने ऐसी कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है कि उसके लिए फिर हम आपको एक अलग से क्लास दें। वो अपने आप में ही हमने धीरे धीरे समझाया सब कुछ, है ना। और फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी लगती है तो आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे, तो फिर कल की छुट्टी मनाइए, है ना। अगर मेरा मूड हुआ कि आपको कुछ पढ़ाना है तो मैं कुछ मैसेज वैसेज डालूंगा, अगर नहीं हुआ तो आपकी छुट्टी कल से, ठीक है। चलो, क्लोजिंग द सेशन नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी आशा जी अगला क्वेश्चन अगली क्लास में। चलो, गुड नाइट, क्लोजिंग द सेशन।